Hmm. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So, yesterday I saw a mail from the registrar. Are you aware of that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, your batch is not the lucky batch. Third year, fourth year BTechs are currently are invited to come to the campus. Any reaction on that? Uh, yes, sir. हम लोगों ने ना sir, we also asked for labs only. Like the way you did for us, we also asked for other subjects as well. Like for analog circuits, we also asked because sir, during this live hardware showcase, it was not very much feasible for us to experience the whole thing and how everything works like practically because of this camera and internet issues. But sir, they are still like we'll see to it, we'll see to it. So So, you are talking with the SBG or Dean AP? sir, till now we have just like asked for we have asked to the professors only, but then we'll Instructors. Okay. yes. So, instructors cannot be committal or they won't come forward. That is a not a good target. Look, fourth year, I don't think that there is any student from fourth year, final year, who would come because more than 90% fourth year students have gone for their BTP to some industry placement के चक्कर में. So why don't you ask SBG to insist on allowing third instead of fourth year, allow or request for second year to come to the campus. सर सर जो लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई थी एसबीजी के साथ तो उन लोगों ने वही बताया था कि नेक्स्ट टाइम जब भी कैंपस ऑफलाइन करने की बात आएगी तो सेकंड और थर्ड ईयर ही होंगे क्योंकि फोर्थ ईयर में तो अभी लास्ट सेम है तो उन सबका खत्म ही हो गया होगा तो उनको क्या ही बुलाएंगे. तो बट बुलाया तो उन्हीं को. हाँ सर वही. हाँ वही कह रहा हूँ. They are saying that if we if we reach the campus and like if all goes well, then we will pressurize on the administration to allow us to like within some time. SVG is saying that. Sir, the SPG members told, like after the mail, I had a chat informally. So they told ki mid-sem break would be a time when we can hope that we will be called on campus. And the reason they are calling fourth year because they want to give single occupancy to students. So since the entire fourth year won't come, so it would be able to the college administration will be able to give single occupancy to the third year and all the people going to the campus. That's what admin gave them as an like a reasoning or ठीक an है, explanation for agreed, not agreed. calling But second year. ये बताओ कौन हो तुम प्रार्थी? Yes, sir. Do you have any data on how many rooms we have in our boys hostel, in our No, girls hostel? sir, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ने एसबीजी को रीजन दिया है कि नहीं नहीं, दिस but रीजन तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना. But if you interrogate or if you argue based on real data, then there is not much room available for anybody to give some hypothetical reason not to address your issues. yes, sir, but Currently, we there are more than 1,000 rooms, not 1,000 rooms, more than 500 rooms, boys hostel. और गर्ल्स हॉस्टल में कितने रूम होंगे? गर्ल्स हॉस्टल में भी मुझको लगता है कुछ 150-200 रूम्स के आसपास होंगे. तो काउंट करके देख लो कितने लोग आ सकते हैं.
एमटेक पीएचडी को तो देखो हम लोगों ने 6 महीने से कहा क्या रखा है कि आइए आप लोग, वो लोग नहीं आ रहे। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन कि अभी हमने फिर से अनाउंस किया है तो ऑल ऑफ एमटेक एंड पीएचडी स्टूडेंट्स विल fall in line or will come to the campus. So majority of the BTech, so from BTech, percentage of BTech students coming to the campus will be certainly more than percentage of PG students. तो कुछ एक मतलब तुम लोगों को भी कुछ होमवर्क तो करना पड़ेगा ना, केवल वर्बल आर्ग्यूमेंट करने में तो अल्टीमेटली अथॉरिटी मिल रही। But if you want to actually come to a conclusion, logical conclusion, then you have to prepare. You have to prepare. You have to do some groundwork. You have to do some single room तो चाहिए ही, क्योंकि हम लोग भी वही एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं कि भाई आप सिंगल रूम दे रहे हैं या डबल रूम दे रहे हैं। तो उस चक्कर में एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हम इनिशियली सिंगल रूम देंगे और देन वी विल ऑब्जर्व वॉच, इफ एवरीथिंग इज ओके देन वी विल allot rooms in double occupancy. But if everything okay, when you are going to revisit that decision, वो सब बहुत वेग है, वो होते होते सेमेस्टर एंड आ जाएगा। तो इस सेमेस्टर में मेरा जो मानना है कि वो फिर यही चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मिड सेम ब्रेक के बाद, क्या मिड सेम ब्रेक कब खत्म हो रहा है, कुछ 17-18 मार्च। Yes. Yes, sir. 18th. हाँ, तो बस उसके बाद तो हार्डली 6 वीक बच रहे हैं ना, अप्रैल एंड तक। शायद मई फर्स्ट वीक में कब है एग्जाम, कब है तुम लोगों का? Yes, sir. May May 4th first May. week, yeah, 4th. शायद 1 या 2 वीक लेट होगा, तो हो सकता है इंस्टीड ऑफ 28th ऑफ अप्रैल योर एंड सेम एग्जाम वुड स्टार्ट ऑन। मैं देख तो सकता हूँ, लेकिन अभी रहने दो, जस्ट वी आर टॉकिंग टू वार्म अप फॉर द क्लास। सो हार्डली 6 वीक की बात रहेगी। उस 6 वीक में तो कोई रिविजिट नहीं होगा ना डिसीजन का। अभी जो इन लोगों ने कंडीशन लगा दिया है उसमें मुझको नहीं लगता है कि मिड सेम ब्रेक के पहले ज्यादा लड़के आएंगे, क्योंकि लगा दिया है कि जो आएंगे उनको हम होली में भी घर नहीं जाने देंगे। तो आई डोंट नो हाउ मेनी वुड, सबको लगेगा कि ठीक है यार फिर होली करके ही जाते हैं, या मालूम नहीं हाउ डेस्परेट स्टूडेंट्स आर एंड how much do you feel yourself associated with these cultural occasions. That all depends upon such such upbringing. But मुझको लगता है कि many of the students might delay their coming to the campus because of this restriction कि आपको होली के टाइम में हम लोग जाने ही नहीं देते। और देखो मतलब मुझको लग रहा था कि अगर तुम लोग हॉस्टल रूम का थोड़ा आइडिया लेके और तब आर्ग्यू करते कि भाई तब भी आपके पास इतने रूम खाली रह रहे हैं, इवन इफ यू आर गिविंग सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम्स, फिर भी आपके पास इतने रूम खाली रहेंगे, तो फिर क्यों नहीं आने दे रहे? सर जब डीन के साथ हमारी मीटिंग थी तब हमने आर्ग्यू किया था सर, वो क्या करते हैं कि ये ऐसा अज्यूम करते हैं कि सभी बच्चे पूरे के पूरे वो सभी आएंगे और उनके लिए रूम अवेलेबल रख के उनको बुलाते हैं। तो इन सभी तो आने वाले नहीं है, तब हमारे भी लिए भी अगर डबल ऑक्यूपेंसी में सभी के लिए जगह होगी तभी बुलाएंगे, और वैसे भी सभी तो आने वाला नहीं है। तो इस पे आर्ग्यू किया था लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। बट हम लोगों ने कुछ एक सर्वे किया था ना तुम लोगों का कि कितने लोग आना चाहते हो, ऐसा कुछ हुआ था, बट दैट हैपेंड इन नवंबर और दिसंबर मंथ। सर वो तो सिर्फ वैक्सीन के लिए था कि किन लोगों ने दोनों वैक्सीन के डोज लिए। अच्छा, ये सर्वे नहीं था कि कितने लोग आना चाहते हो? नहीं सर, हमारी बैच में नहीं हुआ है।
But does it happen in third year and fourth year? You don't know. Probably हुआ तो like open हो रहा था ना. हाँ शायद थर्ड ईयर में हुआ था, नॉट टू श्योर बट आई डिड हियर कि कुछ आया था टू आस्क पीपल जब जनवरी में कॉलेज ओपन होने वाला था तब. सर बट हमारी बैच के लिए हम पीजी में रह सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लेक्चर अटेंड करने के लिए आए और रहने का हमारा खुद का करना होगा. नहीं नहीं नहीं, वैसा तो खैर बिल्कुल नहीं होगा. मतलब डेली आप अप डाउन करने वाला चाहिएगा वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग अगर डेली बाहर से अंदर अंदर से बाहर जाएंगे देन सिचुएशन माइट. देखो इट इज अ वेरी difficult situation. But if colleges all around the world are going back to normal and all, then why is DA thinking कि हम लोग अगर बुलाएंगे तो भी like you are That not is supposed our to जैसे अभी mental blockade. That is our mental blockade, nothing else. बट उस पे आप आर्ग्यू नहीं कर सकते ना. उसके लिए तो हमारे पास बहुत अच्छा रीजन है कि वी आर ट्राइंग टू कीप यू आल्सो सेफ. इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स. इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते. बट एटलीस्ट इस चीज पे तो चैलेंज कह सकते हैं ना कि अगर आपके But पास sir, रूम भी नहीं like है. the way you did, cannot other instructor or professor do like for labs only or anything kinds of? क्योंकि सर लाइक labs में बहुत ही इशू आ रहा है, क्योंकि अभी कल ही मतलब बहुत ही इशू आ रहा था, तो हम लोगों ने वो सर ने बोल दिया कि यस सर, सर ने सामने से ही बोला कि हाँ कुछ ऐसे से मतलब समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को, देन वी विल सी अबाउट इट. सो लाइक आपके एंड से कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब चीफ लैब के लिए या कोई सेशन के लिए ऐसे बुलाए? तब तो वही हो जाएगा ना कि आपको हम डेली आने जाने का परमिशन दे रहे हैं. वो तो नहीं तो नहीं अलाउ करेंगे, क्योंकि लैब आपका वीक में कितने दिन होता है? 2 दिन होता होगा, 3 दिन होता होगा, या एक भी लैब अगर होता है सारे बच्चों का अलग अलग दिन, तो एटलीस्ट 70-80 स्टूडेंट्स आर कमिंग ईच डे एंड गोइंग आउट. No, like sir, like a hybrid, but like lectures can be online, but the labs are mandatory to be attend. Like ऐसे कुछ. हाँ वो समझ गया बट मैं. सर सारे लैब हार्डवेयर लैब नहीं है ना. कुछ कुछ लैब सॉफ्टवेयर लैब है तो उसमें तो कैंपस नहीं होगा, तो 2 दिन होगा अगर हार्डवेयर लैब, तो वैसे कुछ कर सकते हो. आज मैं जरा बकुल से मिलता हूँ. बकुल इज योर न्यू वार्डन, डू यू नो? बकुल से जरा नो मैं. सर. Yes sir. हाँ बकुल sir. बकुल गोयल. हाँ बकुल गोयल, प्रोफेसर बकुल गोयल इज योर न्यू वार्डन. तो सर जरा पर अब तो डबल ऑक्यूपेंसी में भी इश्यूज नहीं होने चाहिए ना, क्योंकि हाँ नहीं वही नहीं, मतलब इशू नहीं होने चाहिए, वो तो है ही यार. इशू नहीं होने चाहिए या किस कारण से इशू हो रहे हैं, नोबडी नोज. तो सर इन्होंने पहले ही प्लान बना रखा था उस चीज का, सिंगल ऑक्यूपेंसी का, और ये अब दिमाग ही लगाना चाह रहे, हाँ तो इन्होंने ऐसे ही कर दिया. वेरी गुड. हमारे एक हॉस्टल बिल्डिंग जितनी जगह में हर दिन 3,000 बच्चे यहाँ स्कूलों में फर्स्ट स्टैंडर्ड से जिनकी वैक्सीन भी नहीं लगी वो भी आ रहे हैं. और हाँ वही 1st to 9th सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं. And there is already restriction, I guess, कि like we can't like go outside the campus though, because single occupancy रहे या double occupancy, then क्या फर्क पड़ेगा? उतना ओपन डिस्कशन ये लोग कर नहीं रहे हैं ना. ये लोग तो अपनी तरफ से कुछ कंडीशन पोज कर दिए तुम्हारे ऊपर, और थोड़ा एसपीजी का भी मुझको फेल्योर फेल्योर तो नहीं कहूँगा. बेचारे तुम लोग भी तो बच्चे ही हो. कैसे हम लोगों से कैसे तुम लोग बहस करोगे? so sir, like should we address to SBG and then should arrange a meet or something, और मतलब क्या करें तो फिर हम? आज मैंने आकाश को कहा है मुझसे बात करने. मैं बात करता हूँ. अपना मुश्किल है तो ऐसा कैसे. yes sir, yes sir. हो गया है कि कोई भी किसी की बात ना ही स्टूडेंट की सुनते हैं ना ही एसबीजी की सुनते हैं.
हाँ, that is happening just because you are not on the campus. कैंपस में होते तो एसबीजी को इस तरीके से नहीं नेग्लेक्ट कर सकते थे हम लोग जिस तरीके से अभी कर रहे हैं. The problem is that कैंपस में नहीं हो ना तो फोन पे ऑनलाइन मीटिंग में तो आई कैन स्नब यू एनी टाइम. और सर पिछली मीट में उनको बोला भी था कि मंथली या वैसे कुछ एक रखा करें मीटिंग, और अभी भी मीट नहीं रख रहे हैं. तो अब हम अपना आइडिया मेल से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इग्नोर, मतलब नहीं देते अच्छे हाँ से. यस सर, लाइक ये सामने से उन लोगों ने मतलब बोला था, फिर भी लाइक देयर इज नथिंग अ मीट और समथिंग, नॉट इवन अ मेल सर. आज शायद वो आएगा नहीं. एसबीजी कन्वीनर तो बॉम्बे रहता है तो वो तो नहीं आएगा, लेकिन somebody would come to see me. देखते हैं क्या बात होती है. I will update you. सॉरी बट क्या करें ये लोग. But let me find out how many rooms are there and how many students are expected to come. That basis, let us prepare our. सर वही तो बुला रहे तो पहले ऐसा सर्वे करवाओ ना कि कितने आ रहे हैं, उसके बाद रूम असाइन करें ना. ये तो सभी पहले से ही मान रहे हैं कि सभी आने वाला है, तो फिर तो जगह बचेगी ही नहीं हम लोगों के लिए. देखो एक बड़ी अच्छी बुक है, आई एम ओके यू आर ओके. प्लीज रीड दैट बुक. दैट बुक इज ऑन ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. हाउ डू वी ट्रांजैक्ट. मैं जैसे अभी तुम लोगों से बात कर रहा हूँ वैसे हर फैकल्टी तुम लोगों से नहीं बात करेगा. डायरेक्टर तुमसे वैसे नहीं बात करेगा. सो देयर आर थ्री टाइप. So three styles of personality. One child, another adult, and third is parent. अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो. एडल्ट टू एडल्ट ट्रांजैक्शन इज considered to be the best transaction which happens very rarely. अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो एडल्ट टू एडल्ट कर रहे हैं. Most of the time when you discuss such things with लेट अस से कि एसबीजी की बात हो रही है डायरेक्टर से या डीन से, या पूरे बैच की बात हो रही है डीन से या डायरेक्टर से, तो यूजुअली इट इज कंसिडर्ड टू हैपन इन एडल्ट टू एडल्ट मोड बट इट हैपेंस इन चाइल्ड टू पेरेंट मोड. हम पेरेंट बन जाते हैं और हम अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं, हम तुमको चुप करा देते हैं. नहीं ऐसा थोड़ी होता है, चुप रहो तुमको क्या मालूम. when we come to resort to such type of logic कि तुमको क्या मालूम, तुमने क्या देखा है, it means we are closing our mind to logics. अभी हो वही रहा है कि हम तुमको ये कह देते हैं कि नहीं नहीं तुमको कुछ नहीं मालूम, हम ऐसे ही करेंगे. So what is happening is child to parent transaction. This should not have happened. बट उसको कन्वर्ट करने में कि वो एडल्ट टू एडल्ट ज़्यादा हो, चाइल्ड टू पेरेंट कम हो, उसके लिए ही तो प्रिपेयर करना पड़ता है ना. जब कोर्ट में लॉयर किसी केस को लड़ता है तो इफ़ यू गो देयर अनप्रिपेयर्ड तो जज तुम पे हावी हो जाता है. और जब लॉयर प्रिपेयर होके जाता है तो इवन देयर आर सम लॉयर्स इन सुप्रीम कोर्ट जो अगर आने का उसका होता है कि टुडे दैट पर्सन, जैसे वो था अरुण जेटली था या चिदम्बरम है, ये लोग अपने 1 मिनट सॉरी वो लोग अपने 1 मिनट के अपीयरेंस का 5-5 लाख रुपया चार्ज करते हैं. डू यू नो एंड कैन यू बिलीव इट. जस्ट बिकॉज दे गो देयर विथ फुल प्रिपरेशन और 1 मिनट में ही वो पूरे दिन का अपना पैसा वसूल लेते हैं. So if you are given an opportunity to remain present in such meetings which are vital for you, not for us, तो होमवर्क तो करना पड़ेगा. हाँ सर अभी आप कैंपस पर हो?
अभी नहीं, अभी जाऊंगा, क्लास करके जाऊंगा, बट जाऊंगा। सर वो क्यों? हमारे रिनोवेशन का क्या स्टेटस है अभी, हॉस्टल रिनोवेशन किसका? का? वो रिनोवेशन हॉस्टल का। रिनोवेशन? हाँ मुझको लगता है रिनोवेशन हैज बीन कंप्लीटेड, क्योंकि अब तो मैं नहीं देख रहा हूँ किसी लेबर क्लास, मतलब लेबर को कैंपस में घूमते हुए तो नहीं देखता हूँ। So whatever renovation was needed, it is now over. सर। ओके, तुम लोगों का वो नाम भी नोट किया हुआ है, तुम्हारे बैच से जो लोग एसबीजी के मेंबर हैं उनका नाम नोट किया हुआ है। इफ आई कम टू नो समथिंग तो मैं बताऊंगा। चलो आप आज का क्लास शुरू करते हैं। तो अब एग्जाम का टेंशन हो रहा है, एग्जाम आ रहा है और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है, मतलब पढ़ाया तो है बट कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया है जो मैं एग्जाम में पूछ सकूं। तो इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू? यस सर। Yes, sir. Let me start recording now, so no gossips. Okay. Let me do. Is it perfectly fine? Okay. So in the last class, we talked about the definition of nanotechnology. And we went through this definition that at least one dimension should be below 100 nanometer is an extended definition, that the topic or the material will fall under nanotechnology. And the narrower definition, stricter definition, is that at least two dimensions are below 100 nanometer and the third dimension may be of any length, meter, millimeter, centimeter, any length. Okay, so that we discussed in the last class. Now, what are nanostructures, nano device and nano system? That also we discussed. In comparison to the substrate, if you are defining the geometrical dimension, then that is called nanostructure. And if at least one functional component is a nanostructure, at least one functional component, mind it, is a nanostructure. Non-functional component अगर nano scale पे है भी, it does not matter. You cannot say it a nano device. But if a functional component, at least one, is at nanostructure, is a nanostructure, then the product will be or can be said a nano device. And if there are many nano devices, then the product is a nano system. We also discussed about why the current VLSI technology cannot be said or cannot be seen as an example of nanotechnology, even though we are working deeply into nanoscale, deeply. Gate length shrink होते होते अब 3 nanometer तक आ गया है, but it cannot be said a nano example of nanotechnology. First time who used the term nanotechnology, first time who showed that yes, we have the capability of manipulating atoms, atom by atom, all these we saw. And we also saw the advantage of starting from small. So bottom to up manufacturing technique. Atom से start करके आप molecule बनाइए, molecule से start करके you make clusters, clusters से start करके you can make nano structure, nano device, nano component, whatever you want to do. So all these we have gone through in past few classes. In the last class also I mentioned these 4-5 very beautiful articles. You must read these articles, and therefore I have compiled their name. You can Google them
download or read online, whatever is preferable for you. But certainly go through these articles. Okay, I'm not going to ask in the exam anything from these articles in detail, but certainly I may ask you that what thought experiment Feynman has described in his talk, there is plenty of room at the bottom. और what are Moore's laws? इस तरह के जो बेसिक जनरल नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, those I may ask in your exam. Now, having done so, I had two branches, or I had two options. One, directly I could have gone to some nanomaterials. Or second branch was that I should go traditionally telling you about some material at macro scale in our world, and then funnel it down till we reach to nanomaterial by comparing some of the properties that look how this property is changing from macro to nano. If you are migrating, how this property has changed to this property, how this is not happening, now a new property will happen. Because remember, in the last class we also discussed emphatically that at nanoscale we need to have new properties, novel properties of material, then only we can say that this is an example of nanotechnology. And on the same ground, we rejected state of the art VLSI industry or techniques as examples of nanotechnology. Do you remember? Yes or no? Yes, sir. Okay. So I am selecting the second part. So what we will do now in coming 4 or 5 classes or 2-3 weeks, that I will start with the normal semiconductor material, and then we will go to some typical examples of nanomaterial. And for that we need to understand how atoms, because at nanoscale where novelty appears, or which is the topic of name of this course, engineered material. So where I can do engineering, that is happening at atomic scale. Remember the example of 20 gold atom circuit and 6 gold atom circuit. One was conductor, another was insulator. So actually what we are doing, we are playing at atomic scale, and therefore we need to understand how atoms interact. However, you know also how atoms interact, but just I am going to refresh that with a different flavor. So here on this slide, we will spend next 2-3 minutes on understanding how do we categorize material. Look, in all our devices, whatever we make, most of those devices or products are actually to harness electrical properties. अपने आसपास जितने भी प्रोडक्ट देख लो, अगर तुम घर पे बैठे हुए हो, certainly you are at home, तो don't look at your doors or your cupboard or your book rack. मुझको जो दिख रहा है, curtains or table, but जो प्रोडक्ट जो हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, so like laptop, like the earphone, like the mobile phone which is in front of me, like TV, like microwave oven, like refrigerator, like cooking range, like
वॉशिंग मशीन, इस तरीके के जितने भी होम अप्लायंसेस जिनको हम कह रहे हैं, ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दैट वी आर यूजिंग और वी आर एडिक्टेड टू यूज, एडिक्टेड टू यूज। आज की तारीख में अगर मुझको तुम ये बोल दो कि साहब bring 4 bricks, make a stove of that, use some dry pieces of wood to fuel that for burning or for getting a flame out of that on which you would cook the food and cook the food. Then I think that you have gone crazy, not me. That instead of asking me to use conduction heater or asking me to use even the gas stove, you are asking me to go to Stone Age generation who were using some different techniques for cooking. So most of these devices or most of the technology or most of the industries which are coming up with new products are basically using some or other semiconductor device. Those semiconductor devices are basically, or electrical devices in general, those electrical devices are actually harnessing the electrical properties of the material. And what are those electrical properties? Those are either current or voltage that you are tracking, that you are measuring, that you are controlling, that you are generating. तुमने पता नहीं ध्यान दिया होगा या नहीं, तुम्हारे मोबाइल फोन का जो चार्जर है का एक अपना रेटिंग है. What input does it require and what output does it give? These days, when you go for a new mobile phone to buy, you may also find fast charging as one of the properties of that mobile phone. What does it mean? Because people observed or users observed, and therefore the demand was raised that I cannot afford charging my phone for 6-8 hours. I am always on the wheel, I am always on the run, and I don't have time, static time, to keep my phone at a charging point. I need my phone to be charged at least half charged in 15 minutes to 30 minutes. But battery is battery. So the battery technology, तो lithium ion नाम सुनते होंगे, that battery technology has become the greatest challenge for the industry or the greatest industry full of return. Battery सीख किया कि how this battery will last long and how this battery can be charged faster. He has won the battle because battery आज की तारीख में हर चीज, everything has become or most of the things have become portable. So because of portability, things are using batteries for energy, and these batteries are the key to success. So on the basis of electrical property, materials are categorized or classified in these three classes: conductors, insulators, and semiconductors. Can anybody tell what is the one single property which distinguishes or differentiates material into whether it is a conductor or an insulator or a semiconductor? Single property. Conductivity. Amount of free charges or charge carriers. Any other answer?
Sir, the energy gap. Any other answer? So the band gap between the conduction band and the non-conduction. Name and ID. Sir, my sir हमारा तरंग सोनी आईडी क्या है? 044. और इसके पहले जिसने बैंड गैप या एनर्जी गैप कुछ बोला था, who was that? Sir, me. Priyanshu Parmar. प्रियांशु. ID? 448. Any other answer? The single property based on which I can say that this material is a conductor, this is an insulator, and this is neither conductor nor an insulator depends upon the external situation or bias, and therefore it is a semiconductor. Rohit Sarang. Any answer? नहीं. Praneet Shroff. Praneet Shroff, are you there? No? Praneet? Very bad. Praneet Shroff. Number of electron in the outermost cell. नहीं, तुम कौन हो? Achieve. हाँ बोलो. Number of electrons in the outermost cell. Number of electron in the outermost cell. Okay. Okay. So the closest, or rather the right answer is given by Tarang, and closest right answer is Priyanshu. जिसने एनर्जी गैप कहा और तरंग ने बिल्कुल एग्जैक्टली कहा, it depends upon the band gap between conduction band and valence band, and that determines if material is conductor or insulator, which is neither a conductor nor an insulator, तो हम शायद semiconductor कहते हैं. So the next question is, so इन दोनों को मैं 1 mark each दे रहा हूँ as bonus. ठीक है? Happy? Hello, sir. Okay. हाँ बोलो. सर हाँ, हाय, माय नेम इज कैनिल. सो सर, अगर हम बॉन्ड का टाइप भी देखें तो भी हमें पता चल सकता है कि जैसे कंडक्टर्स में मेटालिक बॉन्ड होता है, दैन इंसुलेटर्स में आयनिक बॉन्ड होता है, एंड सेमीकंडक्टर्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है. तो मतलब हो सकता है वैसे भी, मतलब बॉन्ड टाइप देखें तो. मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड होता है. हाँ, वेरी गुड. देन मेटालिक बॉन्ड आप लोगों से जब मैंने पूछा था तो आप लोगों ने कोई ठीक जवाब दिया नहीं था मुझको. हाँ ठीक है, बट इट इज बैंड गैप दैट डिटरमिन्स. सो माय क्वेश्चन वाज सिंगल प्रॉपर्टी, जिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं, दैट सिंगल प्रॉपर्टी इज नॉट बॉन्ड स्ट्रक्चर बट बैंड गैप. Okay. So the next sentence is a question. This is poor English. Have you heard होना चाहिए, have you hear नहीं होना चाहिए. Sorry for that.
So have you heard the names of semi-metals? The term semi-metal? Yes, sir. Yes. What is that? Sir, the elements that come in between metals and non-metals in the periodic table and have the properties in between both of them, like germanium, silicon, ये सब carbon. semi-metal हैं. Yes, sir. These are called semi-metal. Yes, sir. कौन हो नाम? बिहार. Bihar. नहीं, बिहार. Kindly correct yourself. At least इसको तो भूल जाओ. ये जो बात तुमने कही. Any other answer? Sir, semi-metals are elements whose conduction and conduction band and valence band overlap slightly, like not as much as conductor, but it overlaps slightly. That helps them to conduct. Overlap slightly. क्या नाम है तुम्हारा? मिहिर. मिहिर. ये गूगल सर्च करके बोल रहे हो या कहीं कभी पढ़ा था जो वेगली याद है? 12th केमिस्ट्री. अच्छा, केमिस्ट्री में बताया हुआ है सेमी मेटल. conduction. Any other answer? I guess, sir, Bihar was right. Who was right? Bihar means first answer, boron or silicon. नहीं, वो तुम क्यों डिसाइड कर रहे हो कि who was right, who was wrong? Let me decide. I know. So तुम बोलो कि हाँ साहब, semi metals are group 4 element or boron and silicon and germanium and carbon. Yes. These are semi metal. ना आंसर दो. Boron, silicon, germanium, and then I guess arsenic. These are the semi-metals. Not all group 4 atoms. Any other answer? Sir, the metals which conduct but are not that hard, meaning their density may be less, meaning they are not as hard as usual metals, like group 1 elements. Okay. So it seems that you have not heard the name. Or right now you are just exploring, or it is not bad. It is good that even if you don't know, you try. You can attempt with your background knowledge to find out the right answer or to reach to the right answer. But you have not heard about semi-metal. Semi-metal is one particular nanomaterial. इसकी बात हम लोग करेंगे थोड़े 2-3 वीक के बाद हम उसकी बात करेंगे. ओके, ग्राफीन इज अ सेमी-मेटल. एक लड़का बहुत क्लोज था आंसर के. इसने कहा कि whose conduction band and valence band slightly overlap. Actually it is not slightly overlap अगर कर गया तो वो कंडक्टर हो गया. Slightly overlap नहीं करता है. Just these two bands are touching at single point. एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, इसलिए ना तो वो सेमीकंडक्टर है, ना वो इंसुलेटर है और ना कंडक्टर है, क्योंकि कंडक्टर के लिए ओवरलैप करता है. Therefore, such type of materials are called semi-metal. हम इसकी बात करेंगे आगे चल. There is where engineering lies. Okay. So what is the next question is that what is the property of materials of group 4 element? अब हम आते हैं जो तुम लोग कह रहे हो, बोरोन है, सॉरी बोरोन, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है. These are actually not semi-metals. These are semiconductors. They have a different, very peculiar property, and because of which these are semiconductors. And one peculiar property is कि वो अपने जैसे similar
4 एटम से, नेबरिंग 4 एटम से दे बाउंड, की जो बॉन्डिंग होगी, इसलिए इनका एक्सटर्नल आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स and therefore they combined with 4 similar atoms on all 4 sides. If you are visualizing in a plane, 3D 3 dimensional अगर करोगे तो ऊपर नीचे भी वो बॉन्डिंग करेंगे, अगल बगल करेंगे, एंड टॉप and on the plane the 4 directions, and in the 3 dimension top and bottom. So 6 atoms वहां पे रहेंगे, बट 6 एटम के साथ सिंगल एटम कैनॉट बाउंड विथ 6 एटम. But in the 3-dimensional crystal array or a structure, they bind such that every atom is bound with 4 atoms, and thereby they get, in the outermost orbit, they get 8 electrons, and that is a stable structure. ओके, तो अभी हम लोग हो सकता है आज अगर टाइम होता है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास तक हम पहुंचेंगे उस पर कि हाउ these bands are created on bond model. बॉन्डिंग के बेसिस पे बैंड स्ट्रक्चर की बात हम लोग करेंगे. So these are group 4 elements. On the same logic, how these group 4 elements are structured in a 3-dimensional crystal form, the same logic 3-5 materials are also possible. पॉसिबल है ना. ग्रुप 3 एलिमेंट हुए जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रुप 5 एलिमेंट हुए जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं. ये दोनों अगर बॉन्ड करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. But these are not similar atoms, these are dissimilar atoms, but if they combine, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर होती है तो इनका 8 outermost orbit हो जाएगा, and therefore they will make an stable molecule, and therefore they exist, and they also have similar properties like group 4 element. So group 3-5 is a special class of materials that are studied under the class of semiconductor materials. For example, गैलियम आर्सेनाइड नाम सुना होगा तुम लोग, सुना है नाम? गैलियम आर्सेनाइड is the most common name. Sir. Yes, sir. Gallium nitride. So gallium is group 3, nitrogen is group 5. These two combine, make a new material, gallium nitride, and gallium nitride is a very good semiconductor material of very peculiar properties that we will cover. And that is different from gallium arsenide. However, both are 3-5 materials. अब अगर मैं कुछ गैलियम एटम को हटा के एल्युमिनियम ऐड कर दूं, बोथ आर फ्रॉम ग्रुप 3, और कुछ आर्सेनिक को हटा के फॉस्फोरस ऐड कर दूं, I can make Al gas P, aluminium gallium arsenide phosphide. Al gas P is another material. इसमें अब मैं अगर इनका कॉम्बिनेशन, not all of these are 25, 25, 25, 25%, या गैलियम आर्सेनाइड में नॉट, गैलियम आर्सेनाइड में तो नहीं कुछ कर सकता, बट अगर मैं एल गैस बनाता हूं तो आर्सेनिक एज इट इज रहने देता हूं, बट some of the gallium atoms are replaced by some of the aluminum atoms. So what is that sum? तो उसको मैं लिखता हूं L सबस्क्रिप्ट X, Ga सबस्क्रिप्ट 1 minus X, and arsenic का AS. So that X is a variable now. That X can go from 0 to 1. अगर X is 0, then that material is gas, gallium arsenide. क्यों?
मैंने लिखा L सबस्क्रिप्ट X GA subscript 1 minus X. So if X is equal to 0, then aluminium का कुछ भी percentage नहीं है. Fractional presence of aluminium is 0. Everything is gallium. So it is gallium arsenide. But if X is 1, then it becomes LS, aluminium arsenide. तो इस 0 से 1 के बीच में infinite possibilities है. For the value of X from 0 to 1, there are infinite possibilities, and therefore I can create any type of material just by changing the fractional presence of the material in this 3-5 component device. L gas. Similarly, अगर मैं L gas P बनाता, दूसरी तरफ अब आर्सेनिक की का कुछ परसेंटेज हटा के मैं फास्फोरस डालता हूं, और उसको भी मैं वैसे ही x की जगह यहाँ इफ आई यूज y वेरिएबल, तो S में लगाया y और P में लगाया 1 minus y, and that y can vary from 0 to 1. So similarly, I can have infinite possibilities of this combination also. Putting both together, I have increased the number of possibilities eventually. So there lies the engineering in this material science. And what is going to happen? Because each atom has different atomic number, so different size, different number of orbit, different number of orbital. तो जिस चीज से हमने बात शुरू की थी, जो तरंग और प्रियांशु ने बताया कि this all depends upon the energy gap. Actually, what we are doing is nothing but changing or manipulating this energy gap. By manipulating that energy gap, actually we are creating new material. So in the coming 2 weeks, we are going to study that, how we are engineering, how we are creating new material for our final product. जो मेरा स्विचिंग करे या जो मेरे लॉजिक गेट में यूज हो, या जो कंडक्टिविटी के लिए हम यूज कर रहे हैं, बैटरी को चार्ज करने के लिए कर रहे हैं या बैटरी बनाने के लिए कर रहे हैं, वट एवर फाइनल प्रोडक्ट वी हैव इन आवर माइंड, we can use different type of material just to see the possibility of making or creating different properties. With the same logic, the question is that is 2-6 material available or possible? जो यहाँ पे मैंने लिखा है, this one. So are 2-6 material possible with the same logic? Is anybody ready to take this question? Sir, can I try? Sorry? Sir, I think that it is not possible because the group 2 elements will prefer mostly to form an ionic bond. So it will form an ionic bond with so the group 2 elements will form an ionic bond with group 6 elements. So there will be no covalent bond. There will be no covalent bond. Any other answer? Question is, are 2-6 materials possible? Based on the same logic on which group 4 we have seen just now, that how group 4 materials are giving us semiconduction property, how we made 3-5 materials.
We replaced silicon and we used gallium arsenide instead, and we are getting almost similar type of property. Besides different energy gap, and that different energy gap is the key to success, key to getting engineering in materials. हाँ बोलो, कोई बोल रहे थे. ग्रुप 2 एलिमेंट्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर मेकिंग ऑलवेज आयोनिक बॉन्ड to make a semiconductor we need a covalent bond. तो मैंने बॉन्ड की तो बात ही नहीं की है. मैंने कभी बताया क्या कि बॉन्डिंग मतलब it is mandatory to have a covalent bond for semiconduction or semiconductor property. But हमने the तो band बात gap की. will be हाँ सॉरी, हाँ कम the go band ahead. gap will be increased. Band gap will be increased. So the electron will not be easily transferred from the each other side because So it will behave like an insulator, right? yes sir, more tending to insulator, not semiconductor. Any other answer? Yes, sir. Sir, I guess that is a semiconductor of tellurium. So क्या semiconductor of? tellurium means that contains tellurium. So tellurium forms semiconductor materials, I guess. Not with group 2 elements, but in general. अब ऐसा आंसर मत दो यार. Not with group 2 element, but in general. What do you mean by in general then? So tellurium. अगर बनाएगा तो group 2 के साथ ही बनाएगा, और किसके साथ बनाएगा? Otherwise, how can you possibly get? हाँ बोलो. Yeah, so it is like maybe tellurium oxide or tellurium TO or T. Tellurium oxide. Tellurium और ऑक्सीजन दोनों group 6 है. Yeah, I know that, sir, but yeah, it is possible. Like, नहीं तो tellurium oxide is not possible. Zinc sulfide or zinc selenide may be possible. कौन हो? देवांशी. Yes, sir. तो अगर याद करो तो 2 दिन पहले शायद हमने जब we started introduction of nano technology or marvels of nanotechnology, whatever you say, हमने तुमको एक विजुअल दिखाया था. एक वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत फेमस हुआ था अपने टाइम में. एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को मैंने दिखाया था. ही वाज हैविंग व्हाइट क्रीम ऑन हिज लिप्स, और एक लाइन स्केच दिखाया था. अ लेडी इज बास्किंग इन द सन एट सम सी बीच, राइट. दोनों के केस में हमने बताया था देयर वाज सम मटेरियल जिसका लोशन ये लोग यूज करते हैं व्हेन you are exposed or we are expected to expose your body skin for a longer duration in sun. तो सन क्रीम लोशन आप लोग ऐसे भी लगाते हो. आजकल तो मैं देखता हूँ कि ये जनरेशन बहुत ज़्यादा यूज करता है सन स्क्रीन लोशन. हमारे जनरेशन में हमको पता भी नहीं था, बट दीज डेज बिकॉज ऑफ commercialism or penetration of such products in the market because of Western countries' influence, you have been using this. So you know what is a sunscreen lotion. तो मैंने 2 कंपाउंड कहा था कि जो यूज होता है. Do you remember what compounds I mentioned? Titanium oxide and zinc oxide. ZnO and TiO. So cadmium and zinc, these are group 2 elements, and selenium, sulfur, tellurine, tellurinium नहीं, tellurine होता है या पता नहीं, Te जो है, and oxygen, these are group 6 elements. तो ऑक्सीजन तो चलो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया. ऑक्सीजन को तुम मतलब तो सेपरेट
Individually, we cannot study under this category because this is the gaseous state, but that can combine with any of these group 2 element in form of oxide. So ZNO, yeah, ZNS, CDS, CDSE, these are some of the materials which are possible from 2,6 example, and these show semiconductor property. So edge of 3, 5, 2, 6 are also possible. ओके अभी ये इंट्रोडक्शन नहीं है, इसलिए मैं इस पे बहुत डिटेल में नहीं जा रहा. दीज आर पॉसिबल. एक सेकेंड मुझको, जस्ट मैं 30 सेकेंड में लौटता हूँ. There was one very annoying sound that was coming, but वो वेल्डिंग का है, कहीं कंस्ट्रक्शन कहीं कुछ एयर चल रहा है. तो ठीक है. So on the basis of such classification of whether a material is conductor or insulator or semiconductor, we study these materials. चाहे वो मैक्रो स्केल पे हो या वो नैनो स्केल पे हो. Fine. So now come back again to atomic level. When I have an atom, so you must have gone through electromagnetic theory course, and in that course you must have defined what are potential or potential energy, and you can very well connect yourself with this slide that we define a potential in terms of work done per unit charge, W upon Q. That work done per unit charge is actually nothing but the potential difference between those 2 points A and B, which that charge travels. So potential at B minus potential is at A is basically that work per unit charge. तो अगर पोटेंशियल B का ज़्यादा है और A का कम है, तो दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस. और अगर B का कम है, A का ज़्यादा है, देन यू हैव टू फोर्स इट टू मूव फ्रॉम B टू A. एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी. And with this concept, we define that potential at infinity is always zero. So infinity जो है वो equipotential point है. Infinity का definition ही वही है. Otherwise, infinity is a very relative term. Whatever is not, I cannot see, is in for me at infinity. But electrically, infinity's definition is that it is an equipotential surface which is having zero potential. So this work done because of charge of one atom Q defined like this, that if I make that charge move from one point to another point, separation of these 2 points shown by or expressed by the variable R, then Q multiplied by potential V, that work done. Okay. Now think of a situation when there is single atom. If there is single atom and there is nothing else till infinity on each direction, then this electrical entity
एटम है ना, इलेक्ट्रिकल एंटिटी के रूप में अगर हम, तो दिस इलेक्ट्रिकल एंटिटी विल फॉलो न्यूटोनियन फिजिक्स और न्यूटोनियन लॉज ऑफ मैकेनिक्स और मोशन। और अगर थोड़ा भी हम इसको एक हल्का सा भी पुश दे दें तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ के बेसिस पे ये इनफाइनाइट टाइम तक वो उसी सेम स्पीड से चलता रहेगा, बिकॉज इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी एक्सटर्नल फोर्स। कुछ और नहीं है वहां पे, सिंगल एटम है वहां, सिंगल एटम है वहां। दैट डिस्कस्ड ऑल दिस। So imagine a space free of any charge. So I need not do any work in bringing in a point charge Q1 in that space because there exists zero electrical field. पहले से वहां पे कोई electrical field नहीं है. Since there is no electrical field, so the charge particle will not experience any potential, and therefore work required to move that point charge Q at any point in that space will be zero. So since work done is zero, so since any potential experience is zero, so work done is also zero. अभी जो हमने define किया, work W is equal to Q into VA. तो Q तो है, but चूंकि V R is equal to zero, and therefore the complete work done product of Q into V is zero. तो Q1 को मुझको उस स्पेस में लाने पे कोई काम नहीं करना है. Now once I place that Q1, ये तुम्हारा वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, which was the textbook that was referred to? ग्रिफिथ्स. ठीक है. सो ये ग्रिफिथ्स के ही एग्जांपल से है, so you can remember. So once I put that Q1 charge in that space, now I wish to bring another charge Q2 in its vicinity, in its influence area. Influence area मतलब जो Q1 के पोटेंशियल को वो एक्सपीरियंस करेगा, वो Q2 चार्ज. The moment the Q2 experiences a potential imposed or created by Q1 charge presence, there is a work done. There is a work done, and so I have to calculate that work. So what that work done could be? Because for Q2 situation is not similar to what Q1 experienced just now. So it is a situation like this, that initially I brought Q1 when nothing was there, and therefore my work done was zero. But once I placed Q1 charge at location R1, which is shown by the vector R1, and then I brought Q2 from some other direction in presence of Q1, then there is a work done because of the potential created because of Q1 or potential experienced by Q2 in presence of Q1, and that potential is given by this formula. Q2 dot, this is dot, Q1 upon curly R12, where this is displacement vector, separation vector. Now having placed Q2 at this position R2, now if I wish to bring another charge Q3, then the work done in bringing the charge Q3 in presence of Q1 and Q2 is certainly a linear combination of
the work done bringing charge Q3 in presence of Q1 and charge Q3 in presence of charge Q2. So this is the formula for that. And this is from your book Griffin. क्लास के बाद पलट के देखना, तुमको मिलेगा वो एग्जाम्पल। इसी तरीके से इफ आई वांट टू ब्रिंग many 100, 1000, millions of atoms in one very close geometrical expansion or area or space, then for each new atom I have to do more and more work because of presence of other atoms. और सबका आप एक ग्रुप बना पेयर बनाते हैं, पेयर बना के सबका आप वर्क डन लिखते हैं, and that is the work done. So ultimately what happens that if you have to find out the total work done because of, let us say, n atoms per centimeter cube volume, n atoms per centimeter cube volume में अगर मुझको n atom arrange करना है, so that work done is given by this formula if the distribution given a continuous as a continuous function, or if distribution is given as a discontinuous function, तो summation के form में हम ले, either it is integral or summation. Rho is charge density, rho into V, so charge into V per unit volume, volume से multiply कर रहा हूँ, d tau is the volume component, infinitesimally small volume component, d tau पे integrate कर रहा हूँ. तो ये dimensionally आप देखिए ये QV का dimension ले रहा है, because this rho is Q upon volume, Q per unit volume. तो एक वॉल्यूम यहाँ डिनोमिनेटर में, एक वॉल्यूम यहाँ न्यूमरेटर में, these two cancel out. Dimensionally मैं आपको visualize करा रहा हूँ. So this is nothing but QV, and we studied just now 2-3 slides earlier that W is nothing but Q times potential. So this gives you the work done. हाफ से हमने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि फॉर ईच न्यू एटम टू बी ब्रॉट इन ए पेयर रिपीट हो रहा है, एक ही एटम 2 बार आ रहा है, तो उसको नलिफाई करने के लिए यू आर एक्चुअली डिवाइडिंग इट बाय हाफ, एंड देयरफॉर दिस इज द फार्मूला. अगर एरिया पे कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर आप सारे एटम्स को अरेंज करना चाह रहे हैं, so just for understanding how this surface is created, because ultimately remember that we started with that everything is happening on the surface regardless of what is in the meat of the material or structure. अगर surface की बात करते हैं तो the same formula will get converted into sigma v dA, where sigma is charge per unit area and dA is your infinitesimally small area element, जिस पे आप उसको integrate करेंगे, again half से divide multiply करेंगे, and that will give you the total work done in bringing or in fitting all those atoms in that area or in that volume. So now the question is that why at all are we trying to formulate these? We are trying to formulate this because of one simple reason, that how solids or crystals are formed. और उससे हम ultimately आएंगे कि how these energy gaps or energy bands are created. कौन सा एटम कहाँ रहेगा, कहाँ जहां भी रहेगा, कंप्लीट उसका पोटेंशियल स्ट्रक्चर क्या होगा. So if atoms tend to occupy this much space, उस जगह का पोटेंशियल कितना है, and from there if I want to stretch or bring one atom or
or break one atom from that place or one electron from that place and try to bring it to some other place, तो मुझको कितना work करना है? What are the possibilities that in what locations I can put that atom? Are all locations in the space allowed? If not, what is happening at that place where it is not allowed? What are those non-allowed space called? तो वो चीज समझने के लिए we started with the basic knowledge of our electromagnetic theory, not electromagnetic theory, electrostatic theory. Coulombian law, simple Coulombian law के definition से हम start करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं. So case one is when these are completely isolated. क्योंकि atom electrons, how these are arranged, they follow certain rule. सेम जगह पे आप दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते. सेम जगह, व्हाट डू यू मीन बाय सेम जगह? सेम जगह मीन्स सेम. So in terms of energy, how do we define a point? यहाँ पे ऊपर में लिखा है ना कि when two atoms are brought together, Pauli exclusion principle becomes important. What is Pauli exclusion principle? Anybody? Pauli exclusion principle. लोगों का आजकल रिस्पांस बहुत पुअर हो गया है. Any particular reason? Two electrons can have same set of quantum numbers. So what are quantum numbers? Orbit number, azimuthal number, spin state, and orbital. The two electrons cannot have same orbit number, orbital number, and spin state. All three things cannot be same. That is the exclusion principle. Wrong. Any other answer? कितने क्वांटम स्टेट हम डिफाइन करते हैं? There are 4 quantum states, sir. 2, 3, 4, 1, 4. What are those 4 quantum states? First of all, there's the उसको quantum principal quantum number जो उसका मतलब principal quantum number जो n होता है, जो orbit number n होता है. n is equal to 1, 2, 3, 4 है ना? n cannot be 0. So that is called principal quantum number. What is the next quantum number? azimuthal quantum number जो एक कम होता है उससे 0 to n-1 होता है. L. वो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो तुम बता रहे हो. What is that called? How this is generated? All these are related with concept of energy. याद रखो पूरे फिजिक्स में हम एनर्जी और मास की ही बात करते हैं. Orbital angular momentum quantum number L. Well, this is the same as azimuthal quantum number. Angular momentum. Spin quantum. Spin quantum number. And what is the fourth one? Magnetic quantum. Magnetic. Yes. Meaning what? तो क्या क्या सिंबल है सबका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ n. N, L, M, and last spin quantum number S. नहीं पहला हुआ n, दूसरा क्या हुआ? Azimuthal L. नहीं सिंबल क्या हुआ? L. L, sir, L. L is angular momentum L. angular momentum. तो angular momentum क्या होता है? फिजिक्स में, मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ा है ना. इज एंगुलर मोमेंटम वेक्टर और स्केलर? वेक्टर. तो वेक्टोरियल फार्मूला क्या है एंगुलर मोमेंटम का?
R cross MV. R cross P. Let P. R cross V. नहीं, R cross MP मतलब momentum R cross. Linear momentum. Yes. So linear momentum comes from the velocity. So कोई भी इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से वो कितने डिस्टेंस पे है और किस वेलोसिटी से देयरफॉर वो मूव कर रहा है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको एंगुलर मोमेंटम देगा. राइट. थर्ड क्वांटम नंबर इज Magnetic quantum number. Magnetic quantum number. and that is defined denoted by M. तो m नहीं, ml सबस्क्रिप्ट l, क्योंकि उसके साथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में उसका एंगुलर मोमेंटम इम्प्लिसिटली इन्वॉल्व है. Yes sir. तो ml से उसको हम डिनोट करते हैं. थर्ड इज ms स्पिन क्वांटम. उसका क्या स्पिन है, 0 है या 1 है? सो 0 या 1 है. हाँ, तो अप स्पिन है या डाउन स्पिन? ओके. 0-1 होता है या प्लस माइनस हाफ होता है? प्लस माइनस हाफ. प्लस माइनस हाफ. प्लस माइनस होता है. हाँ. तो पहला सिचुएशन कह रहा है कि व्हेन सो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सो किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऑल दीज 4 क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी सेम. मीनिंग अगर हम एक बॉक्स में उसको रख भी रहे हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन उस बॉक्स में रहेंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होंगे. राइट. अगर उसका n, l, ml तीनों चीज सेम है तो भी ms के बेसिस पे दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट करें. बट अगर n डिफरेंट है या l डिफरेंट है या ml डिफरेंट है, so there are various combination and thereby we are actually arranging electrons, and there that is how we write electronic configuration of any atom given the atomic number. वैसे ही लिखते हो ना, पता है कि कौन सा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, सो नेक्स्ट एटम कहाँ जा रहा है ये तुमको मालूम है. मतलब कौन से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट या ऑर्बिटल में जा रहा है ये तुमको मालूम है. उसके हुंड्स रूल फिर लगाते हो. आफ्टर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हुंड्स रूल लगा के you write the electronic configuration of any atom. So the first case is when the two atoms are very very far away, they are not influencing each other, and this is पिछले क्लास में हमने रिजोल्यूशन की बात की थी from optical property. This resolution is from electrical property. जब दोनों एटम इतने सेपरेटेड है that they are least impacting each other potential state or state of energy, then we can say that these two are completely resolved. एक एटम को हम psi1 वेव फंक्शन से डिनोट करते हैं, एक को psi2 से करते हैं. psi1 is not at all affected by psi2. So this is like that when there is no possibility of interaction between these two atoms. But immediately case 2 is when these two atoms or many atoms start influencing each other, and then things change. Then things change because of Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle उनको रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप एक जगह पे 2 एटम नहीं आएंगे या एक जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे. फिर भी if you are forcing them to come together, then they start splitting in their energy. This is a situation like, अभी तो तुम लोग क्लासरूम आए ही नहीं हो, अदरवाइज मैं एग्जांपल वही देता था कि every student can sit on single bench, and that is Pauli exclusion principle in that classroom sitting design or template. But suppose I have only 20 benches or chairs in my class, and for some reason
30 students came. तो अब मैं कहूंगा तुम लोगों को एडजस्ट करने, एडजस्ट करने में क्या होगा कि 10 बेंचेस पे 10 और लड़के शेयर करेंगे. 10 chairs will be occupied by single student. तो 10 हो गया और remaining 10 chairs will be occupied by 2 students. So 20 हो गया. So 30 students now jolly well occupy my class and can attend my class. But अभी क्या हुआ? 10 chairs have a split. The possibility of adjusting a student. So template थोड़ा change हो गया. However, it is designed for one student. But because of the situation, because of some external condition, now you have adjusted and एक चेयर पे मान लो 40 लड़के आ गए 20 चेयर में, हर चेयर पे पहले 2-2 लड़के बैठेंगे. ऐसा नहीं होगा किसी चेयर पे 4 बैठ गए और किसी पे एक ही है अभी भी. Atoms also know how to adjust, and during such adjustment the energy level जो atomic level में atomic structure में which are precisely defined energy levels, those energy levels, precisely defined and separated energy levels, are now splitting and those become energy band. Just for the simple reason to accommodate more and more atoms in the same space. क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो लगना ही लगना है. तो in the average range of one energy level, they try to stretch it as much as possible to make it an energy band. जब उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है तब वो दूसरे लेवल को फिर स्ट्रेच करना शुरू करेंगे और वहां फिर दूसरे चेयर में फिर एकोमोडेशन शुरू होगा. एडजस्टमेंट और शेयरिंग विल स्टार्ट. So if you visualize, these energy bands start, these energy levels start spreading themselves or splitting themselves in form of energy band, and this happens when we try to accommodate more and more atoms. And when we try to accommodate more and more atoms, when we try to make crystals, क्योंकि crystals में हो सकता है 10 to power 17 atoms per centimeter cube, 10 to power 19 atoms per centimeter cube. We are trying to accommodate stuff, tightly packed crystals we want to make, तभी वो exist करते हैं, तभी उनको हम देख सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, मैन्यूवर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं. So this is in a very loose sense giving you an information about how energy levels are now splitting into energy bands or how energy bands are created, and this is the diagram of silicon. पूरे 4 एलिमेंट सिलिकॉन इस तरीके से स्प्लिट करके 2 एनर्जी बैंड तो one band is this, other band is this. So the earlier fixed levels of silicon atom जब वो perfectly dissolved थे, perfectly separated थे, तो ये था. अब this has a split and this has also a split, and now all electrons are arranged in this manner, and this lower band we call valence band because all valence electrons, 4n valence electrons, are occupying these states, and these 4n states have no electrons. This is called conduction band. The moment I make one electron jump from valence band to conduction band, conduction starts. So we will start next class from this graph or figure, whatever you say.
उसको एक बार आप अपनी तरफ से देख के आइएगा. So that will help you understand, because this concept is very important. Okay. So let me stop today's recording. Stop sharing. If you have some quick questions, time बहुत ज़्यादा हो गया, 11:46 हो गया. I have a meeting at 12:30. But एक दो question मैं ले सकता हूँ. So Tarang 044 and Priyanshu 448 have gotten 1 mark each as bonus mark. Any quick question? Otherwise, I am ending today's class. No? चलो ठीक है. Thank you very much.